डियर स्टूडेंट, आई एम मनोहर पाटिल। आई नो दैट आप सभी लोगों को रोटेशनल बहुत ही टफ जाता होगा, लेकिन रोटेशन बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें क्या होता है, सो मेनी फार्मूलेज होने की वजह से ये थोड़ा टफ लगता है। इसलिए हम वन बाय वन फार्मूलेज कवर कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वी टेक द वन शेप एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी सॉल्व द फार्मूलाज, एंड दोज फार्मूलाज आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग द एमसीक्यूज ऑन नीट जे और सीटी एग्जामिनेशन। तो लास्ट तक इसको अच्छे से देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो जरूर करना है। चलो लेट्स वी स्टार्ट। सो today we have to solve the linear speed and acceleration. We have to derive the expression of uniform disk. आपको शेप अच्छे से याद रखना है। यूनिफॉर्म डिस्क और सॉलिड cylinder performing the rolling motion. What is meant by rolling motion? The object possesses both translational as well as rotational motion without slipping on inclined plane. So now we already draw the diagram. बहुत simple diagram है. We consider the solid cylinder. This is the solid cylinder or disc. Now it is rolled down over the inclined surface. This is the angle of inclination, height h, uska linear displacement h. S, we write down the notation. M be the mass of the body. So which body we consider? That is disc or solid cylinder. R is the radius. Theta be the inclinations. H be the height. And S be the displacement. Linear displacement. So बहुत important है, बहुत easy concept है. What happen? So whenever we take the uniform disc, इसको अगर हमने यहाँ से roll down किया तो what happen? It perform both translation as well as rotational motion. So whenever it perform the translation as well as rotational motion, we can calculate the linear speed and acceleration of the disc or solid cylinder just by that the formula of moment of inertia. So remember, what is the formula of linear speed? That is v equal to under root of 2gh divided by 1 plus k square divided by r square. And what is the formula for acceleration? बहुत simple formula है. So that is a equal to g sin theta, g for acceleration due to gravity, divided by 1 plus k square divided by r square. So for solving, we required the value of k square divided by r square. We know that. So for solving the k square upon r square, we just know the what is the moment of inertia of the body. So which body is given now here? That is uniform disc or solid cylinder. So हमें उसका moment of inertia पता होना चाहिए. So moment of inertia of uniform disc or solid cylinder, remember the formula, I equal to half m r square. So इसको compare करना है हमें with standard formula of moment of inertia. So in terms of radius of gyration, that is I equal to mk square. So just by equating both expressions, what we get? mk square is equal to half mr square on both side. What our observation? बहुत simple है, हम दोनों side से mass को cancel कर लेंगे, and after that we take the ratio of k square upon r square. So क्या आएगा उसका रेशो? जल्दी बोलिए. k square divided by r square, that is 1/2. So we get the value that is 1/2. तो हमें सिंपली इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है. सो व्हाट वी गेट? दैट इज v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2. तो इसको सॉल्व करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. तो जल्दी रिकैप कीजिए, क्या आएगा इसका आंसर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से? 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, मतलब 3/2, और उसका रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा. सो दैट इज इट्स बिकम 2 ऊपर जाएगा तो 2 2 ज़ा 4. सो 4 डिवाइडेड बाय 3gh. सो ये वेलोसिटी का फार्मूला मिला. सो रिमेंबर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला. सो 4 divided by 3gh. Next we solve for acceleration. So what we get? Very simple. So substitute करना है हमें g sin theta divided by 1 plus 1/2. इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या आएगा आंसर? g sin theta divided by, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 plus 1, that is 3/2. Taking the reciprocal, so we get the formula of acceleration equal to, that is 2/3 g sin theta. So this is the formula of acceleration. Most important है, अच्छे से इसको prepare करना है. Take the screenshot of the given example. Many times they ask the MCQ on NEET JEE और CET examination. I hope you will understood properly. अगर कोई doubt है so definitely आपको text करना है. I will answer that.
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।